लगता है ये सिलेक्शन प्रोसेस नहीं है, अनसिलेक्शन प्रोसेस है। ये इतना भी डिफिकल्ट नहीं है। जब रिजल्ट आया, एग्जाम दिया तो लगा कि कुछ भी वर्थ नहीं है ये। Difficult, persona, consistent, self-study, focused, results, up to the mark, fear of losing out, privilege, struggling, respect, need, positivity. IIT. India is the heartland of 1.3 billion people, the second most populous country in the world. Even more staggering is the fact that it is home to 20% of the world's youth population. Approximately 50% of the Indian population is of or below the age of 25. For Indian teenagers, these numbers mean dealing with the immense pressure to excel in a country of 1.3 billion people. And at no other time do these pressures reflect more than in the face of competitive exams like the Joint Entrance Exam and the National Eligibility Cum Entrance Test. The one-way ticket to entry into the country's premier engineering colleges and medical institutes, these exams are much more than just entrance tests. But with only 23 IITs in one of the most densely populated nations on earth and vastly oversubscribed dental and medical colleges, competition is intense. जाए कॉलेजेस हमारे पास इंडिया में बहुत कम है और कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। 17-18 लाख की एप्लीकेशंस हर बार आती है, रजिस्टर होती है, जिसमें से अगर आप देखा जाए तो 15-20 हज़ार की कॉलेजेस आपको बच्चों को प्रोवाइड कर देते हैं। कोचिंग कल्चर एक्चुअली ओवरऑल कंपटीशन का स्टैंडर्ड बढ़ा रहा है, मतलब टफनेस बढ़ा रहा है। स्टैंडर्ड ना भी सही शब्द हो तो टफनेस मेरे हिसाब से बढ़ा रहा है। To put the competition into perspective, 19,500 students took the first All India Engineering Entrance Exam held in 1961. The number of students in 2020 has gone up to 11.18 lakhs with a success rate of less than 1%. The same is the case with NEET. In 2013, 7.17 lakh students registered for the exam. In 2022, the number of registrations increased by a whopping 161% to 18.72 lakh with a success rate of 0.04%. But why have these exams become one of the major national events, the most dominating evaluator for certifying one's success in life? A wide variety of reasons, beginning with the assumption of the Indian society, where some professions like civil services, medicine and engineering are regarded to be status symbols and are widely respected. Most parents want their children to become engineers or doctors for many reasons. These include better job prospects, better living conditions, stability in life, the social capital associated with these professions, as well as cultural beliefs about these professions. The competitive exams का सीन ये था कि look, अगर as in it was not a compulsion कि IIT चाहिए, but the results, right? It was like badge of honor कि इतना स्कोर करा है। फैमिली का तो जाहिर सी बात है, फैमिली के ये होते हैं कि बेटा डॉक्टर बन जाएगा तो नाम हो जाएंगे, तो लोग इज्जत करने लगते हैं। अभी कोई डॉक्टर बनता है समाज में उसकी बहुत ज़्यादा इज्जत हो जाती है। और लोगों का नजरिया, रिश्तेदारों का फोन आया, भाई भैया का, इनका उनका, मतलब फिर तो बहुत सारे लोग आ जाते हैं। बोलते नहीं है कि खुशी में तुम्हारे पास सब कोई आएगा, लेकिन दुख की जो घड़ी होती है ना, उस टाइम पे कोई नहीं आता है। फैमिली को जो रिस्पेक्ट मिली ना, दैट्स बियॉन्ड एनीथिंग। लाइक उससे ज्यादा मैं कुछ मेरी लाइफ में एक्सपेक्ट ही नहीं कर सकती, मैं कुछ विश भी नहीं करती इससे ज्यादा। These sky-high expectations are strongly related to the emergence of coaching institutions in almost all parts of the country over the years. Every year, millions of young students from all over the country pay hefty amounts to coaching centers, the urban cousin of the formal education system. According to official data, 7.1 crore students in the country are taking these private coachings with only one mission: taking classes to crack these entrances in their bid to earn a coveted engineering or medical seat at these prestigious institutions. The practice of cracking these exams is trainable. None of these entrances are designed to test the inherent intelligence of a person. Students cannot display their conceptual knowledge or talent in such exams because of the type of pattern followed in them.
मैंने कोचिंग्स में जाके देखा कि वहाँ आपको कभी उस सब्जेक्ट को समझना नहीं सिखाते हैं। एटलीस्ट नीट में तो यही होता है कि आपको कभी ये नहीं सिखाते हैं कि इस सब्जेक्ट में आपको कैसे पढ़ना है, बायोलॉजी के मतलब अंदर घुस के आपको कोई पढ़ाया नहीं जाता है। तो आपको वो कॉन्सेप्ट से कभी प्यार नहीं हो पाता, आप कभी समझ नहीं पाते हो कि वो कॉन्सेप्ट्स आपको समझाना क्या चाहते हैं। आपको बस टिप्स और ट्रिक्स बता दिए जाते हैं कि ये जो क्वेश्चन है इसको 1 मिनट में कैसे सॉल्व करना है। आपको एक चीज कॉमन मिलेगी, इज दैट द लर्निंग कर्व जो इंस्टीट्यूट्स यूज करते हैं, देयर प्रैक्टिसेस, दे आर बेसिकली द सेम। दे जस्ट वांट यू टू टेक वन राउट, इट विल नॉट बी अ सीनिक रूट दो, लेकिन उसी पे चिपकना है, एंड देन यू हैव टू सॉल्व दीस अमाउंट ऑफ क्वेश्चंस, दीस टाइप ऑफ क्वेश्चंस। वेदर आपको वो अच्छा लगे या फिर आपके इंटरेस्ट में नहीं हो या फिर आपको बिल्कुल भी पसंद है, लेकिन यू हैव टू डू इट। की जगह पर बाउंड हो जाना पड़ता है कि अगर 3 सब्जेक्ट्स आ रहे हैं हमारे एग्जाम में तो आपको उसी के तरफ बस सराउंड रहना पड़ेगा, आपको बस उसी को देना है। मतलब ऐसा होता है कि आपकी दुनिया बस उन्हीं चीज़ों के अराउंड रिवॉल्व करने लगती है, आप कुछ और एक्स्ट्रा सीखने का टाइम नहीं होता है। The coaching centers view students as a means to earn profit. Those from affluent backgrounds would be able to afford these coachings for their children, which in India cost more than rupees 75,000 a year. An IIT study identified that 95% of those who entered the IITs had attended coaching classes. The economics of NEET coaching classes is also staggering, with the cost of a student in Kota, for example, amounting to at least rupees 5 lakh. पेरेंट्स के भी दिमाग में फिट करवा दिया है, जो पूरा एजुकेशन सिस्टम उन्होंने मिक्स किया है, खासकर जो मार्केट बना चुके हैं, इसको प्रॉफिट अर्निंग कंपनीज बन चुकी है काइंड ऑफ एजुकेशन की जगह वो। मैं कोटा में गई तो मुझे पता चला कि हमारा वहाँ पढ़ाने के लिए से ज़्यादा हमारा बिजनेस पे फोकस किया जाता था। This becomes unfair to students who cannot afford such coaching. These entrance examinations put students from rural areas at a disadvantage, and thus such groups find low representations among those admitted in such colleges. मोस्टली मैं आपको बोलूंगी हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए और जिन्होंने रूरल एरिया से स्टडी करी है उनके लिए बहुत ज्यादा टफ होता है। The atmosphere of these coaching institutes is highly competitive. The top performing students are given special attention. Average and below average performing students are often ignored. टीचर्स यूज्ड टू प्रेफर द लाइक हाई रैंकर वंस, हम लोग पीछे रह जाते थे। बच्चे लाओ, कुछ बच्चे को इकट्ठा करते थे और कुछ बच्चे जो अबव 600 स्कोर करते थे ऑल इंडिया में, तो वो लोग को वो बहुत अच्छा बेसिक नीड्स देते थे, बाकी कहीं ना कहीं लैक आउट कर जाते थे। There's a star batch too. People will try to get into the star batch too. Starting से फिर ये सिलेक्शन का आप पे प्रेशर पड़ता है कि they kind of stamp you कि you're no good. That is why you are doing the third or the fourth sect. Students who are often seen to excel at their academics in schools are petrified at the competition they face at these centers. एक क्लास उसमें 60 बच्चे, उनमें मैं सेकंड थी उस टाइम, तो ये था कि ऐसा लगता था कि मैं ही हूँ जो हूँ, मतलब ऐसा टॉपर वाला फील आता है। बट जब यहाँ सिटी में आए, कंपटीशन देगा, तो मतलब ऐसा लगे कि हम कुछ नहीं है। Ideally, every student should be provided with the best resources and support they need. It is disheartening and frustrating for low-performing students to mirror this reality. In this reckless pursuit of merit, what do students actually go through to clear the exam that gets them a seat in the college of their choice or shows them their place under the sun, at least for now? ज्यादा मैंने कभी सोचा नहीं था। जिस दिन मैं नीट का मैं बता रही हूँ, नीट का पेपर अभी वाला जो दिया था, उससे 3 दिन पहले मैं लगातार नहीं सोई थी। सोई मीन्स मैं मतलब ऐसे लेटी भी नहीं थी कि कमर दर्द हो रही है, लगातार 3 दिन तक बिना सोई गई थी। एक अलग माहौल होता है कोटा जाके, और जेईई की प्रिपरेशन और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में ऑफ कोर्स तुम्हें एक मेंटली तो इफेक्ट पड़ता ही है। एक ऐसा नहीं है कि हाँ नॉर्मल स्कूल लाइफ चल रही है, तुम 7th क्लास में ऐसे हो, नहीं, वो चीज नहीं होती है। जेईई प्रिपरेशन में मतलब टेंशन आती है, ऑफ कोर्स यू विल गो थ्रू स्ट्रेस, और ये सब चीजें होती है, चाहे तुम कितने भी चिल हो, चाहे तुम कितने भी रिलैक्स्ड हो। For months, even years, teenagers live a life cramming morning, noon, and night in the hope of a secure, financially appealing future. Students who prepare for these exams give up everything, from socializing with friends and going to movies to enjoying school life that a typical teenager desires to involve in the rigorous training process. मैं टोटली डिस्कनेक्टेड, स्टिल मैं अभी भी बात करूँ, जो मेरे सच मतलब बोलते हैं ना बेस्ट फ्रेंड्स हैं, उनसे ही बात हुई है अभी भी, लेकिन वरना मेरी सारी बेस्ट फ्रेंड मतलब दोस्त वगैरह थे, उनसे सारा कनेक्शन टूट गया था। मैंने 3 साल पूरे लगाए नीट में। Yes,
lost a lot of stuff. जैसे कि जो मेरे दोस्त थे, they were doing good in their respective schools. तो क्योंकि उनके पास काफी सारे एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज थी, they had the time for everything. आप कट जाते हैं, चीज़ों से कट जाते हैं। अब जैसे IPL वगैरह हो गए हैं, क्रिकेट वगैरह में क्या चल रही है, जैसे मैं पहले मुझको एक याद थी कि 2007 में IPL कौन जीता, राजस्थान, डेक्कन चार्जर, पूरे ऐसे आते हैं। लेकिन जब आप तैयारी करने जाते हो तो आपके लिए ये चीज़ें एलियनेटेड हो जाती हैं, फिर आप इन चीज़ों से दूर हो जाते हैं। So what is the brighter side of this system? What pictures do the success stories paint of a life after these competitive exams? तो जब भाई उस टाइम की एक खुशी थी ना, जो मतलब जितना खुश मैं नहीं था जितना मेरे घर वाले थे, मतलब जब मैंने बताया पापा को कि मेरा फर्स्ट राउंड में नहीं हुआ था, है ना, फिर सेकंड राउंड में क्या हुआ कि सेकंड राउंड जैसे ही मेरा अलॉटमेंट आया, जैसे ही मैंने खोला भाई, ओपन किया और पापा को बताया मैंने कि पापा अलॉटमेंट लेटर आ गया है। भाई पापा इतने खुश थे ना भाई। लोग ये नहीं बोल रहे कि आपकी बेटी को MBBS कॉलेज मिल गया, पीपल आर सेइंग कि आपकी बेटी डॉक्टर बन गई। सिलेक्शन से एक्सपोजर मिलता है, थोड़ा कॉन्फिडेंस भी मिलता है, लाइक द वे यू स्टैंड अमंग पीपल, यू फील लाइक यू हैव समथिंग। पहले तो मेंटली प्रिपेयर होके आना कि सिर्फ नीट नहीं है, नीट एक सिर्फ एक गेट है, उसके बाद बहुत सारे गेट है जो तुम्हें खोलने हैं। जितना तुमने नीट में पढ़ा है ऐसा तुम्हें अभी 10 साल तक पूरा पढ़ना है। मेरे फैमिली में सबको मुझसे कुछ एक्स्ट्रा एक्सपेक्टेशंस हैं और जो मैं शायद पूरी नहीं कर पाई, तो हाँ एक रिग्रेट मुझे भी है और उन्हें भी है कि दे हैव सपोर्टेड मी वेरी मच, बट शायद मैं अपनी जगह पर फेल हो गई। आज भी इट्स लाइक पापा को बोलती हूँ पापा ये अचीव दिस, पापा इज़ लाइक बेटा उस बेटी ने नीट निकाला है। थोड़ा कंपटीशन ज़्यादा है, थोड़ा क्या एक्चुअली बहुत ज़्यादा है, तो इसलिए सिलेक्शन प्रोसेस तो जो है जैसा है ठीक ही है। उससे ज़्यादा दिक्कत मुझे ये लगती है कि ना सिलेक्शन होने पर जैसे ट्रीट किया जाता है, आप एज ए फेलियर मतलब ट्रीट होते हैं। गिल्ट, अ लॉट ऑफ रिग्रेट, अ लॉट ऑफ सेल्फ डाउट जो उस टाइम से आता है, क्योंकि मतलब कन्वेंशनली जो चीज़ मुझे करनी चाहिए थी वो मैंने नहीं की। Dreams are easy to wake up from, but waking up from a vision that has been with you for years is a lot more challenging. As the spectre of unemployment or the notion of a superficial social prestige haunts the young minds and their overprotective parents, it is interesting to note how students who are termed as failures created by this competitive system develop a different perspective of life. मुझे कहीं ना कहीं लगा नहीं, आई शुड एंटर ऑन समथिंग एल्स जिसमें मैं लोगों के लिए कुछ कर सकूं ऑन अ डिफरेंट वे। डॉक्टर नहीं बन सकती बट किसी और तरीके से लोगों की मदद कर सकूं। Someone said that knowledge is free. Yeah, I agree on that fact कि knowledge is free. You just need to look. मैं ये नहीं कह रहा कि सिर्फ वही एक ऑप्शन, there are a lot of options. वो स्ट्रेस और वो प्रेशर एक अलग लेवल का होता है जिस टाइम पे आप पेपर दे रहे हो। वो 3 घंटे आपको डिसाइड करने वाले क्या क्या हो, क्योंकि उस बच्चे को पता नहीं है कि इतना भी मैटर नहीं करता लाइफ में। While competitive exams argue to refine quality, they represent the system's incapability of providing higher education to all. It is worth noting that globally, such centralized exams are infamous, and most top-level universities, and for that matter, job selection agencies, are resorting to composite selection procedures. It is ironic that while, on the one hand, we wish to create institutes of excellence that will rank amongst the best in the world, we do not wish to extend to our own institutions the features which would allow them to replicate practices being followed in these excellent institutions. In order to truly create centers of excellence in education, there needs to be a paradigm shift in our approach to and expectations of examinations. And more importantly, we need to move to build systems that treat students as real, tangible identities of a population rather than just machines, and a society that respects professions across the spectrum. Kudos to those who couldn't make it to the end, and to those who never became heroes. Salute to the unfulfilled wishes. Salute to the lonely and courageous. Salute to the immortal struggles. Salute to the life of oblivion. Salute to the incomplete victors. And salute to all the losers along with the winners.